ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरोचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओं नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायप्रवर्तकेभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् इति मङ्गलश्लोकः। गतपाठे वयं किं किं पठितवन्तः स्मरन्ति वा? अत्सन्धि प्रकरणं समापितवन्तः। पूर्वरूपसन्धिः एङ्गः पदान्तादति इति। अनन्तरं अवङ्गादेशसन्धिः अवङ्स्फोटायनस्य सर्वत्र विभाषागो एतत् सर्वं पठितवन्तः। अद्य वयं प्रकृतिभावसन्धिं पठामः। प्रकृतिभावः नाम कः अर्थः? प्रकृतिः नाम स्वभावः। स्वभावः नाम यथा अस्ति तथा। प्रकृतिभावः नाम तत्र सन्धिवशात् यद्यत् प्राप्तव्यं कार्यं तत् कार्यं किमपि न भवति, यथा अस्ति तथैव तिष्ठति इत्यर्थः। अतः अस्य प्रकृतिभावः इति नाम। अयं सन्धिः अत्सन्धौ एव अन्तर्भवति। नाम द्वयोः अज्वर्णयोः मध्ये वस्तुतः यः सन्धिः भवेत् सः सन्धिः न भवति, तावदेव। टुडे वी आर गोइंग टू learn what is prakriti bhava sandhi. Prakriti bhava means the two vowels, the previous and the following vowel will remaining as it is or same without any changes, even though there may be some cause to do any atsandhi, but that sandhi won't happen. That's called prakriti bhavaha. तत्र प्रकृति भाव संधि विषये आदौ प्लुतः कुत्र भवति इति। प्लुतः भवन्तः जानन्ति खलु? प्लुतः इत्युक्ते हलो प्लुतः त्रिमात्रिकः त्रिमात्राकालिकः अज्वर्णः यः अस्ति सः प्लुतः इति उच्यते। तर्हि प्लुतः तु अस्ति, परन्तु कुत्र तस्य प्लुतस्य व्यवहारः कुत्र भवति तदर्थम् एकं सूत्रम् आदौ उच्यते। प्लुतः कुत्र विधीयते इति। We know that the trimatrika ach, the vowel which is pronounced for 3 seconds of time, that's called plutaha. We know that that pluta is exists, but where we should use that pluta, this sutra tells durad dhute cha. There are so many sutras in Ashtadhyayi. One of them they have mentioned here. दूरात् भूते च, दूरात् भूते च पदविभागः। दूरात् भूते च, भूते नाम आहूते, आह्वाने कर्तव्ये। दूरात् यदि कञ्चित् वयम् आह्वानं कुर्मः बहु दूरात्, तदानीं यत् वाक्यं तत् आह्वानार्थं यत् वाक्यं प्रयुञ्ज्महे तस्मिन् वाक्ये टिभागः यः अस्ति टिभागः प्लुतः भवति। टिभागः प्लुतः भवति इत्युक्ते टिभागस्य यः अज्वर्णः अस्ति सः अज्वर्णः प्लुतः भवति। वाक्यस्य टिभागः, पूर्वं वयं टी अचोन्त्यादि टी सन्दर्भे पदस्य टिभागं दृष्टवन्तः, तथा वाक्यस्यापि यावन्तः अज्वर्णाः सन्ति तत्र विद्यमानेषु अज्वर्णेषु अन्तिमः अज्वर्णः यः अस्ति तदारभ्य यावान् भागः अस्ति सः टिभागः। तर्हि पदच्छेदः तावत् दूरात्
हूते च अनुवृत्तिः वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इति सूत्रं। तत् सूत्रं सम्पूर्णम् अत्र अनुवर्तते। वाक्यस्य टेः नाम वाक्यस्य टिभागस्य किं भवति? प्लुतः भवति एवं उदात्तस्वरोऽपि भवति। कदा? दूरात् हूते, दूरात् आह्वान समये यत् वाक्यं प्रयुज्यते तस्य वाक्यस्य यः टिभागः अस्ति तस्य टिभागस्य यः अज्वर्णः सः प्लुतः भवति एवं उदात्तः अपि भवति। अवगतम्? What this sutra tells, there are three words in this sutra: durat, hute, cha. Durat means if somebody is calling someone using some sentence and the distance is far, between these two people it's very far. So whenever we call somebody in this kind of situation, then the sentence which we use, the tibhaga of the sentence should be pluta and in udatta swara. उदाहरणानि पश्यामः। उदाहरणानि पश्यामः। सक्तून् पिब देवदत्ता इति वदति। कश्चन सक्तू निर्माणं कृत्वा स्थापितवान्। तर्हि स आह्वयति, देवदत्तम् आह्वयति, सक्तून् पिब देवदत्ता इति। तर्हि अस्मिन् वाक्ये देवदत्ता इति वाक्यस्य प्लुत टिभागः कः? अन्तिमः अज्वर्णः। देवदत्ता इत्यत्र अन्तिमः अज्वर्णः, अतः सः आकारः प्लुतः भवति एवं उदात्तस्वरोऽपि भवति। तदेव देवदत्त सक्तून् पिब, वाक्यं कथमपि भवान् प्रयोक्तुं शक्नोति, वाक्यस्य टिभागः प्लुतः भवति। अधुना पश्यन्तु, देवदत्त पिब सक्तून्, अत्र ऊकारः अज्वर टिभागस्य अज्वर्णः, अतः तस्य ऊकारस्य प्लुतः विधीयते एवं स च उदात्तोऽपि भवति। अवगतं वा? प्लुतः एकं निमेषम्। Sir, even in Sambodhan, right? In some cases, I mean, I know technically Pluta would not be used, but can there be a situation there also that we are calling? Like there are so many sutras are there. Whenever in this kind of situation, while calling somebody from far away, in this kind of situation, if hey or hai is used, these two are avyayas. Hey Devadatta, Devadatta hai, these two also used for Sambodhana. So if these two are used, then the Pluta will, the Pluta and Udatta will get that Ekara and Aikara. Hey Devadatta. So hey would be Pluta. Yes, yes. Okay. That's the opposing sutra of this, Apavada Sutra. Okay, okay. Hai he prayoge, hai hayo. The sutra is called hai he prayoge. If you are using hai or he in this kind of vakyam or sentence, then the Pluta and Udatta will be the he, the ekara of he and aikara of hai. Okay. So it need not be the noun only. No. Okay. No. Got it. So these kind of rules are there. So in this situation, the tibhaga of the sentence will get pluta. Tibhaga means only the hrasvaha, dirghaha, plutaha, or udattaha, anudattaha, swaritaha, anuswaraha, anunasikaha, ananunasika. These characters are only for aj letters. That's why
Even though Anunasika, some hal letters also are there, but these six characters, Udatta, Anudatta, Swarita, Hraswaha, Dirgha, Plutaha means these will be applied only to the Aj letters or vowels. That's why even though it is the T bhaga will be in Pluta, means we should understand that the T bhaga, the Aj letter of T bhaga will be in Pluta and Udatta Swara. Okay? Dura Dhute cha. Moving to next sutra. Here, some we'll do one thing. We'll understand next concept also. Now we understood how when this Pluta will be applied or will happen. Now another concept is there, that's called pragrahyam. Pragrahyam. So what is pragrahyam? Idude dvivachanam pragrahyam. Padachhedah. Idudet dvivachanam pragrahyam. So what is idudet? Eet cha, oot cha, et cha. Samaharat dvandvaha. If we do samaharat dvandvaha, then it will become idudet. It means what do we understand by listening eat? Any answer? Eat. Rasva of E. Sorry, eat. Dirgha. Oh, sorry. This is Taparakaranam of Dirgha Ikara, Dirgha Ukara, and Dirgha Ekara. So, Idute means Dirgha Ikara, Dirgha Ukara, Dirgha Ekara. Dvivachanam. Whenever these Ikara, Dirgha Ikara, Dirgha Ukara, and Dirgha Ekara are the ending letters of any Dvivachanantam Padam, then these Ikara, Ukara, Ekara will get the name of Pragrahyam. It will be seen as Pragrahyam or Pragrihya Samya. It's a Samya. So these Ikara, Ukara, Ekaras will become Pragrahyam. Sir, Okay. what does it mean? Idute means what? Eat. Have you gone through the Taparakaranam lesson? If it was in the last one, then sorry. So, Okay, no problem. I'll explain you a little bit briefly. Normally we have learnt a sutram Anuditsavarnasya cha pratyayah. I think you yes. So what does this sutra tell? If any anvarna is taken, then we should consider its savarna varnas also. So if A is taken, then we should consider all the 18 akaras. But in some situations, we should not consider all the anvarnas, all the savarnas. We should only specifically we should consider somewhere some hrasva varnas. Sorry. Govinda. Somewhere some hrasva varnas. In some cases only dirgha varnas. In some cases only pluta varnas. Then how to negate other letters? If we want to consider only hrasva varna, then we should negate the dirgha and pluta. If we want to consider only dirghas, then we should negate the hrasva and pluta. So for that, another sutra is there. Taparastatkalasya taparaha. The an letter which is used as taparaha. Taparaha means two kinds of samasas are there. Taha paraha yasmat saha taparaha. From after any anvarna, if takara is used, then that varna is called taparaha. Like at, it, ut. Here also it, ut, et. Ta is used after this letters, these letters. So these letters are called taparaha. And tat paraha taparaha, tat purusha samasaha.
if any un letter is used after takara. So in Guna Samnya Sutram, adeng gunaha at teng. So ta only has become dakara due to just from jasta sandhi. So deng, d eng, t eng. So eng is used after takara. So here eng pratyahara is taparaha. So whenever any unletter used as taparam used by doing taparakaranam, then we should only consider that which letter is being used as taparakaranam, only that kind of letters. If hrasva letter is used, then we should only consider hrasva letters. If dirgha letter is used, then we should only consider dirgha letters. So if somebody says at, means we should only consider hrasva akara. Hrasva akara means 6 kinds of akara. Hrasva udattaha, hrasva anudattaha, hrasva swaritaha, and anunasikaha, anunasikaha. Again 2 differences. So these 6 kinds of hrasva akara we can consider, not other than this. So this taparakaranam will negate other varnas. Like here also, eet, oot, et, these are used as taparakaranam. So eet means we should not consider 18 ikaras, only 6 ikaras which are dirghas. Oot and et. So dirgha ikara, dirgha ukara, dirgha ekara. Whenever any dvivachanantam form ends with dirgha ikara, dirgha ukara and dirgha ekara, then these letters will be known as pragrihyam. These letters will be known as pragrihyam. For example, harihi, hari, harayah. This is hari shabda, ikarantaha pullingaha. Here in dvivachanam it ends with hari. So here the ikara is the ending letter in a dvivachanantam word, hari. So here this ikara will be known as pragrihyam. Guruhu, guru, guravaha. So here guru, this ukara also in dvivachanam which ends with this dirgha ukara, that's called pragrihyam. Rama, rame, ramaha. So here ekara, dvivachanantam, that's also called known as pragrihyam. Not only this is limited for namavachaka shabdas or nouns. In dhatus also we can find edhate, edhete, edhante. So here in dvivachanam it's end with ekara, that ending ekara, that will be known as pragrihyam. Idude dvivachanam pragrihyam. The dirgha ikara, dirgha ukara, dirgha ekara. If these 3 letters are the ending letters of any dvivachanantam rupam, then these are called as pragrihyam, or these will be known as pragrihyam. ये इसी सूत्र के द्वारा हमें प्रगृह्यम ये क्या होता है ये बताते हैं. किसी भी द्विवचनांत शब्द जो होते हैं, पद जो होते हैं, वो नामवाचक हो सकता है या क्रियावाचक भी हो सकता है. इसमें द्विवचनांत में, द्विवचन में अगर द्विवचन के रूप में, द्विवचन रूप में अगर अंतिम वर्ण दीर्घ ईकार नहीं तो दीर्घ ऊकार नहीं तो दीर्घ एकार अगर होता है तो ये ई उ ए ये वर्णों का क्या नाम होता है? प्रगृह्यम बोल के नाम हो जाता है. अगर प्रगृह्यम नाम हुआ तो क्या मिलता है वो आगे हमें जानेंगे. हाँ, अभी पढ़ेंगे ये. पहले हम क्या जाने थे, प्लुत वर्ण कहाँ होगा. अगर दूर में कोई है तो उसको संबोधन करने के लिए जो वाक्य का प्रयोग करेंगे उसी वाक्य का अंतिम
जो उसी वाक्य का जो टिभाग है उसी टिभाग का अज्वर्ण, नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं उसी वाक्य का अंतिम अज्वर्ण जो है उसका प्लुत प्लुत काल में उसका प्रयोग करना होगा। जैसे सक्तून पिब देवदत्ता, देवदत्त सक्तून पिबा, जो अंतिम अज्वरण होता है उसका प्लुत में हमें उच्चारण करना चाहिए। अभी प्लुत क्या है पता चल गया, और कहाँ इस्तेमाल होगा ये पता चल गया, और प्रगृह्य और भी है, प्रगृह्य क्या है उसका स्वरूप पता चल गया, और भी बहुत सारे के तरह का प्रगृह्य है, पढ़ेंगे। तो ये प्लुत और प्रगृह्य इसका क्या लेना देना है संधि में? ये संधि क्या, कौन सा संधि है? प्रकृति भाव संधि। अचसंधि का ही अंतर्भाव, अनुसंधि में ही अंतर्भाव होता है, मतलब दोनों अज्वरणों के बीच में अचसंधि के नियमों के हिसाब से यहाँ संधि होना चाहिए, लेकिन यहाँ संधि नहीं होगा, दोनों जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। प्रकृति भाव मतलब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो अज्वरणों के विषय में ही ये भी संधि है, इसीलिए अज्वरण अचसंधि में ही अंतर्भाव है, प्रकृति भाव, लेकिन यहाँ संधि नहीं होगा। उसका सूत्र अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, प्लुत प्रगृह्याः पदच्छेदः अचि नित्यम, प्लुत प्रगृह्याः अचि नित्यम। प्लुत प्रगृह्याः मतलब क्या है? प्लुताश्च प्रगृह्याश्च प्लुत प्रगृह्याः, ये प्लुत वर्ण या प्रगृह्य वर्ण, ये दोनों को मिला के प्लुत प्रगृह्य। अगर प्लुत वर्ण नहीं तो प्रगृह्य वर्ण के बाद अचि कोई भी अज्वर्ण होता है तो वहां जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई नित्यम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, मतलब मैंडेटरी ऐसे ही रहेंगे, कोई वहां संधि कार्य या बदलाव कुछ भी नहीं होगा, परिणाम कुछ भी नहीं होगा। प्लुताः प्रगृह्याः च अचि परे परत्र अज्वर्णः अस्ति चेत् नित्यं प्रकृत्या भवन्ति, नित्यं सर्वदा यथा सन्ति तथैव भवन्ति इति अर्थः। So this sutram tells about the prakriti bhava sandhi, pluta pragrihya achi nityam. There are three words. Pluta pragrihyaha, this is dvandva samasah, plutascha pragrihyaascha pluta pragrihyaha. And anurti is prakritya. There is a sutram called prakritya. That sutram comes as anurti. So plutaha pragrihyaha, the az letters which are pluta letters and which are pragrihya letters, those letters, if those letters are followed by any aj letter, then there won't be happen any kind of changes in the name of sandhi. And it is mandatory. Plutaha pragrihyaha cha achi pare नित्यं प्रकृत्या भवन्ति। अधुना प्रगृह्यमिति वयं दृष्टान्तः किमिति, प्लुतमिति किं दृष्टान्तः अधुना पश्यन्तु। प्लुतस्य अत्र उदाहरणम् अस्ति, प्रगृह्यस्य अग्रे भवति। देवदत्ता, अत्र एकमेव वाक्यं, दूरात् धूते, दूरात् सम्बोधने यद्वाक्यं भवति तस्य प्लुतः अन्तिम अज्वर्णः नाम टिभागः प्लुतः भवति। अत्र देवदत्ता इति एकमेव वाक्यं, देवदत्ता इति आह्वयति, तर्हि अन्तिम अज्वर्णः कः? तकारोत्तर अकारः, सः प्लुतः जातः, अतः त्रि इति लिखितं पश्यन्तु। देवदत्ता, अत्र गौश्चरति, देवदत्तः एवं यज्ञदत्तः द्वे मित्रे गाः चारयितुं गतवन्तौ, गाः चारयितुं। देवदत्तस्य एका गौः अन्यत्र कुत्रचित् गता, तां गाम् अन्यः कश्चन दृष्टवान् यज्ञदत्तः, सः वदति देवदत्ता गौः अत्र चरति, अत्र गौश्चरति, अत्र अस्ति तव गौः इति वदति। तर्हि देवदत्ता इति प्लुतः, तदनन्तरम् अत्र इति अकारः अस्ति, तर्हि अत्र सामान्यतः अकारः परत्रश्चेत् कः सन्धिः भवति? सवर्ण दीर्घ संधि भवति। आ
अनयोः स्थाने दीर्घ आकारः भवति सामान्यतया किं भवेत् देवदत्तात्र गौश्चरति इति भवेत् परन्तु तत्र सन्धिः न भवति देवदत्ता प्लुतः प्लुतात् परत्र अकारः अज्वर्णः अस्ति अतः अत्र सन्धिः न भवति तथैव देवदत्ता अत्र गौश्चरति अवगतं वा these are some examples already we know that whenever some sentence is used to call somebody who is far away the last aj letter will become pluta so in this example devadatta is the sentence the devadatta person who is far away so this person is called like devadatta so the last akara is pluta and the next sentence what he is saying is atra gauscharati so this sentence starts with a vowel so technically here the vowel is following the pluta varna pluta letter akara even though a and a both are here the previous letter is also a and the following letter is also a so according to the sutram akas savarne dirghah here savarna dirgha should be should happen savarna dirgha but because of this sutra plutapragrahya chinityam in no atsandhi will happen it will remain as it is devadatta atra gauscharati now we will see what other kinds of pragrahyas one kind of pragrahya is ikara ukara and ekara these three letters whenever we find at the end of any dvivachanantam padam then we should consider these three letters as pragrahyam now adasomat this also tells about pragrahya samya adasaha mat padachhedah adasaha mat anuvrittihi idut from idude dvivachanam pragrahyam idut this part is coming as anuvrittihi and pragrahyam that pragrahyam word also so idude dvivachanam pragrahyam from this sutram idut pragrahyam then what is the sutrartha adasaha is sashti vibhakti adasaha means adas there is a sarvanama shabda which is called adas asau amu ami the rupam will be like this the forms will be like this so adasaha is sashti vibhakti here sashti vibhakti doesn't show about tell about the sthana sashti here this sashti is avayava sashti mama hastaha iti vadami chet mama avayavaha hastaha vrikshasya shakha iti vadami chet vrikshasya avayavaha shakha tatra sashti bhavati avayava avayavi ityarthe sashti तद्वत् अदसः इति अपि अवयव षष्ठी इति उच्यते अवयव अवयवी भावे षष्ठी तर्हि कः अर्थः भवति अदस् शब्दस्य अवयवस्य इत्यर्थः अदस् शब्दावयवस्य इति मात् इति तत्र अन्वयति मात् नाम मा इति शब्दस्य पञ्चमी मकारात् परत्र अदस् शब्दावयवः यः मकारः तस्मात् परत्र यौ ईदूतौ यः ईकारः दीर्घ ईकारः एवं दीर्घ ऊकारश्च भवति तौ द्वौ प्रगृह्य सम्यकौ भवतः इत्यर्थः अवगतं वा अत्र अन्ते एव भवेत् द्विवचने एव भवेत् इति नियमः नास्ति पूर्वस्मिन् सूत्रे ईदूते द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रे किम् आसीत् ईकारः ऊकारः एकारः एतत् त्रयमपि द्विवचनान्ते भवेत् द्विवचनं पद यत् पदं भवति तस्य अन्ते भवेत् परन्तु दीर्घ ईकारः दीर्घ ऊकारः यदि अदस् शब्दस्य यः मकारः भवति असौ अमु अमि असौ इति रूपे मकारः नास्ति परन्तु अमु अमि इति रूपे
तत्र रूपयोः मकारः श्रूयते तादृश अधशब्दावयवः यः मकारः तस्मात् परत्र यः ईकारो वा ऊकारो वा भवति सः द्विवचने एव भवेत् इति नियमः नास्ति अन्ते इत्येव भवेत् इति नियमः नास्ति तस्य प्रगृह्यम् इति संज्ञा भवति इति उच्यते अधशब्दावयवात् मकारात् परौ यौ ईदूतौ नाम ईकारः ऊकारश्च दीर्घ ईकारः दीर्घ ऊकारश्च तौ द्वौ प्रगृह्य सम्यकौ भवतः नाम तयोः प्रगृह्यम् इति नाम भवति इत्यर्थः पश्यन्तु असौ अमु अमी पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे कथं रूपाणि भवन्ति असौ अमु अमूः नपुंसकलिङ्गे अधः अमू अमूनि अत्र सर्वत्रापि मकारात् परत्र यः ऊकारो वा ईकारो वा भवति सः प्रगृह्य सम्यकः भवति तस्मात् परत्र यदि कुत्रचित् अज्वर्णः अस्ति चेत् तत्र सन्धिः न भवति किमर्थं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति सूत्रम् पश्यतु उदाहरणानि अमू आसाते आसाते नाम उपविशतः आस्ते नाम उपविशति आस्ते आसाते आसते इति रूपाणि आसाते नाम उपविशतः द्वौ उपविशतः इति अमू नाम एतौ द्वौ उपविशतः अमू आसाते अत्र वस्तुतः कः सन्धिः भवेत् हेलो अयवायाव सन्धि इको यणचि यणादेश संधि अयवायाव संधि एच् ए ओ ऐ औ स्थाने प्रवर्तते अत्र ऊकारः अस्ति इको यणचि इति सूत्रेण अत्र यणादेशः भवेत् अम्वासाते इति भवेत् ऊकारस्य स्थाने वकारः परन्तु स न भवति अमू आसाते अमी ईशाः अमी नाम एते ये सब भगवान हैं अमी ईशाः ईशाः मतलब भगवान बहुवचन में ईशः ईशौ ईशाः अमी ईशाः अत्र सवर्ण दीर्घ संधि भवेत् परन्तु न भवति अमीशाः इति न भवति अमी ईशाः तथैव भवति अवगतं वा पुनः एकवारं पश्यामः हियर another kind of प्रगृह्य संज्ञा सूत्रम् अदसोमात् there are two words adasaha mat adasaha is षष्ठी विभक्ति of adas adas is a shabda sarvanama shabda or pronoun which means this so adasaha here षष्ठी vibhakti used in the meaning of avayava avayavi arthe षष्ठी so what is this avayava avayavi arthe षष्ठी means this षष्ठी represents the connection between the what we say it's a kind of part other shabda the mat is makarat the makara is a part of other shabda or makara is the one of the letters which are in other shabda it says this adasaha means other shabda vayavasya the makara which is the part of other shabda that kind of makara after that kind of makara if any ikara or ukara are there these two letters will be considered as pragruhyam and anuvritti comes from idude dvivachanam pragruhyam from this sutra idut ikara and ukara and pragruhyam these two words comes as anuvritti so other shabda vayavat makarat paro the makara which is the part of other shabda and after that makara if any dirgha ikara or dirgha ukara is there these two letters will be considered as pragruhyam and here there is no rule that these ikara or ukara should be at the end of dvivachanam rupam only or at the ending letter only at the end of the shabda only no that kind of rules so in dvivachanam or bahuvachanam also we can consider as pragruhyam ukara and ikara which are used after makara or comes after makara
Here are the examples. Adashabda in Pullingam, the forms will be asau, amu, ami. So here in Dvivachanam and Bahuvachanam, Dvivachanam is Ukara is there after Makara, and in Bahuvachanam Ikara is there after Makara. So here these two in these two forms, Ukara and Ikara will be considered as Pragruhyam. And if Pragruhyam letter is followed by any Ajvarna, then there won't be any Atsandhi. So Amu Asate, here actually Igvarna is followed by Ajvarna. So Iko Yanachi, as per the Sutram, Iko Yanachi, Yanadesha Sandhi should be there. But here, because the Ukara is Pragruhyam, that's why here it will remain as it is. Amu Asate, Ami Isha. Asate means Upavishataha. Here. Chadayo Satve, Chadayaha Asatve. Iti Padacheda. Chadayaha Asatve. There is a very big group of Chadi group, which is called Chadayaha or Chadi Ganaha. There are so many Nipatas are there. Nipatas means we can't find any explanation for that how the Shabda is derived. The Shabda is used as that like that only. Lauk Ramayati iti Ramaha. Rama means one who gives happiness to all. Like this we can get the meaning by deriving the meanings of Prakriti and Pratyaya, Dhatu and Pratyaya. But here, Nipata, wherever in Nipata, in the case of Nipata, we can't find that Vyutpatti. And we can't find divide this Nipata words into Prakriti and Pratyaya. So it's kind of earlier when the mobiles are introduced. So there used to be the battery and the mobile phone used to be separated. We can remove the battery from the mobile phone. But nowadays, what the phones which we use, we cannot remove the battery from the mobile phone. We should use as it is, like that. So, Chadayaha, Chadi Gana is there, a group. Where in this group, so many avyayas are there. Cha, Vai, Tu, Hi, Aha, Evam, Eva, Noonam, Shashvat, Yugapat, all these are avyayas. So, these Chadayaha, Asatve, Asatvam means Na Satvam, Asatvam. Now we should understand what is Sattvam. Sattvam means if any word has lingam, vachanam and vibhakti, or any word can be used in lingam with lingam, vachanam, vibhakti, that's called Sattvam. Like Ramaha, Sita, Dhanam, Edhate, Asti, all these are, we can use in some vachanam, in some vibhakti, in some lingam, or in some purusha, all these things. But cha is a avyayam. Cha, which means and, in the meaning which we use in the meaning of and. Rama and Krishna, both are friends. Ramaha, Krishnaha cha, mitre, or suhurdau. So here cha, we can't use in any lingam or any vachanam or any vibhakti, we can't use cha. Or there are no lingam, vachanam, vibhakti for cha. So this cha is called adravyam or asatvam. Sattvam means which can be used with lingam, vachanam and vibhakti. So that is sattvam. So which doesn't have any lingam, vachanam, vibhakti, that's called asatvam. Fine. So in this Chadi Gana, the Shabdas which Shabda Swarupas we have, if those are used as asatvam, then these we can consider as nipataha. Now you may have one doubt.
can these letters can be used as sattvam also? Yeah, I mean these letter can be used with vibhakti and vachanam or lingam also. Yes, if somebody's name is Cha, for example, I'm saying, if somebody's name is Cha, then Chaha agataha, you can say Cham pashyami, vibhakti. Chena saha bhashanam karomi, Chaya phalam dadami, Ramaya, like Chaya. Chatu pustakam swikaromi, idam chasya phalam. Like this we can use in all the vibhaktis or lingam and vachanam also. Here, cha has become sattvam. Do you understand? But wherever these chadigana shabda swarupas are used as asattvas or used as without vibhakti, vachanam, lingam, these kind of shabda swarupas are called as nipata. एक बार फिर से बता रहा हूं, चादयः असत्वे, ये सूत्र में दो शब्द हैं, चादयः असत्वे, अनुवृत्ति निपाताः, प्राग्रीश्वरान् निपाताः, ये एक सूत्र है, उसी सूत्र से निपाताः शब्द अनुवृत्ति के तौर पर आता है. तो चादयः असत्वे अर्थे निपाताः भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः. तर्हि चादयः नाम चादिगणे ये शब्दस्वरूपाः सन्ति सर्वे. असत्वं नाम किं? न सत्वम् असत्वम्. सत्वं नाम किं? सत्वं नाम लिंग संख्या कारकान्वयित्वं सत्वं. नाम यत्र यस्मिन् शब्दे लिंगस्य प्रयोगः दृश्यते, संख्या प्रयोगः दृश्यते, नाम वचनम्, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं, एवं कारकं नाम विभक्तिः प्रयोगः, विभक्त्या एव प्रयोगः क्रियते. अधुना रामशब्दस्य विभक्तिं विना प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः वा? कुत्रचित् या कापि विभक्तिः तत्र भवति, तथा प्रयोगः अस्ति चेत् तत् सत्वम् इति उच्यते. सत्वं नाम तत्र क्रियायाम् अन्वयति. रामः गच्छति, राम तद् गमनक्रिया अस्ति, क्रियया सह सम्बन्धः रामस्य अस्ति. रामं पश्यामि. So here, when chadayaha asatve means when chadayaha are used as asatve, when they are asatva. So this one asatve is a sort of describing the condition of chadayaha. Yes. Right? It is not two different entities. It is only referring to one chadayaha when they are in asatve. As asatvam. So by this we we can know that in some situations these letters can be used as sattam also. Okay. There is no rule, because if my name is Cha, then you must use that any with vibhakti or asatvam. So whenever these shabda sarupas are used as asatvam, then only these are called nipatas. So one more understand, or in another way also we can understand what is asatvam. Kriya anvayitvam sattvam. The words which relate to any action in any manner, those words are called sattvam. Like Devadattaha. So when Shashti Vibhakti, will it be asatvam? Not like that. In all the cases, Shashti Vibhakti is not asatvam. Whenever the Shashti Vibhakti tells about sambandham, then it won't be related to Kriya. So let me finish this explanation. Okay. So Devadattaha Pakashalayam Sthalyam Kashtaihi Tandulam Pachati. Pachati is Kriya. Taha Pachati, Devadattaha Pachati. So Devadatta word also relating with this Kriya. Devadattaha Pachati.
कुत्र पचति? पाकशालायां पचति. So pakashala means kitchen. So pakashala is holding that whole action along with Devadatta. So this is also related to kriya, action. So this is also pakashalayam also sattvam. पुनः कथं पचति? स्थाल्यां पचति. स्थाली means vessel. स्थाल्यां पचति. So sthali also become adhikara. It has also become adhikaranam for that paka kriya. Kim pachati? Odanam pachati. So odanam, tandulam pachati. So rice also has become sattvam because it relates with the paka kriya. In this sentence only, if I modify a little bit, Devadattaha pakashalayam sthalyam katham pachati? Kashtaihi pachati, using woods. So those are also relating with the pachana kriya, like tritiya bhakti. These are being used as instrument, upakaranam, sadhanam. That's why tritiya bhakti. Kashtaihi pachati. Okay. पचति पश्यति च. देवदत्तः पाकशालायां स्थाल्यां काष्ठैः तण्डुलं पचति. पश्यति च. So here Pashyati also related with Devadatta, but cha is not relating with any kriya, neither with pachati nor with pashyati. Just it combines those both meanings, pachati and pashyati. That's it. Now, not relating with the kriya means not helping any action, not contributing in any action to perform that. Because here Devadatta also contributing that action by performing that. Pakashalayam Saptami, that Pakashala is also contributing its efforts by holding that whole thing. That's why Saptami. Sthali also contributing some efforts by holding that rice. That's why Saptami. Kashtaihi, those woods are those also contributing to generate that action or outcome by burning. Odanam, tandulam, the rice itself also contributing, becoming an object of that action. So contributing means kriya janakatvam. They are contributing themselves to perform that action. But cha is not contributing like that. So here cha is adravyam, asattvam. Got it? कौशल जी समझ में आ गया? जी एक बार हिंदी में पुनः दोहरा दीजिए. जरूर. चादयः असत्वे. दो अर्थ हैं. पहले दो शब्द हैं. पहले असत्वम मतलब क्या देखेंगे. न सत्वम असत्वम. सत्वम मतलब क्या? जो सत्व नहीं है वो असत्व है. सत्व मतलब क्या? किसी शब्द स्वरूप का लिंग, विभक्ति, वचन के साथ प्रयोग करना. इसका अर्थ ऊपरी ऊपरी अर्थ है. मतलब क्या है? मतलब किसी भी क्रिया को उत्पादन करने के लिए, क्रिया को साधन करने, क्रिया को करने के लिए जो जो शब्द उसी क्रिया के साथ जुड़ते हैं, मतलब उस क्रिया को क्रिया की उत्पादन में सहायता करते हैं, वो सब सत्व है. जैसे देवदत्तः उदाहरण. देवदत्तः स्थाल्याम ओदनम काष्ठैः पचति. यहाँ देवदत्तः पचति. पचति वो जो पाक क्रिया, उसी क्रिया को उत्पादन करता है कौन? देवदत्त. वही शुरू करता है और सब पूरा करता है, इसीलिए वो करता है. स्थाल्याम वो पाक क्रिया जो करता है, कहाँ करता है? एक पात्र में करता है. तो पात्र क्या करता है? वो क्रिया, अगर पात्र नहीं है तो कहाँ पकाएगा? तो पकाने का जो क्रिया है, वो क्रिया को मतलब पकड़ा हुआ है वो पात्र. तो ये पकड़ने की वजह से वो क्रिया हो रही है.
तो क्रिया होने के लिए ये सहायता कर रही है, इसीलिए ये सत्व है। तो क्रिया को पकड़ रही है बोल के अधिकरण बन गया, इसीलिए सप्तमी में हम उसको बोलते हैं स्थाल्याम। काष्ठ ही, अगर पाक क्रिया होना है, पकना है, तो क्या चाहिए? अग्नि चाहिए। अग्नि कैसे आती है? लकड़ियों को जलाकर। तो लकड़ियां भी उस क्रिया को निष्पादन करने के लिए, क्रिया को बना क्रिया करने के लिए सहायता करते हैं, वो साधन के तौर पर, इसीलिए तृतीय विभक्ति में यूज करते हैं काष्ठ ही। वो चावल जो है, वो चावल भी अपने आप में वो पाक क्रिया आनी चाहिए। पाक क्रिया मतलब क्या है? विकलिति बोलते हैं। विकलिति मतलब वो नरमिलापन, जो खाने में खाने की लायक बन जाए। पहले जो कठिन होते हैं चावल, वो पकाने के बाद नरम और स्वादु बन जाते हैं, खाने की लायक बन जाता है। वो नरमीलापन जो होता है, मृदुत्व, वही पाक क्रिया का फल है। वो फल को अपने में लाने के लिए वो चावल वहां प्रयास करते हैं। तो इन सारे तरीकों से जो जो शब्द होते हैं, वो अर्थ जो जो होते हैं, वो सब उस क्रिया को निष्पादन करने में लगे हुए हैं, क्रिया के साथ संबंधित हैं। लेकिन चा जो है वैसा नहीं है। जैसे उदाहरण, देवदत्तः स्थाल्याम काष्ठैः पचति पश्यति च। तो ये पश्यति देखने में, ये चा किसी की तरह भी देखने को उत्पादन नहीं करता है, या पकाने का पचती में भी उत्पादक नहीं है, मतलब संबंध नहीं करता है। कहाँ संबंध करता है? केवल पश्यति और पचती, इन दोनों को जोड़ के रखा है बस। उस क्रिया को निष्पादन करने में लिए कोई इसका योगदान नहीं है, इसीलिए उसका विभक्ति वचन लिंग कुछ भी हम प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए वो असत्व है। सत्व मतलब क्रिया के साथ संबंध रखना। संबंध मतलब कैसा? क्रिया को निष्पत्ति करने में उसकी हिस्सा, उसकी जो उसके हिसाब से जो सहायता करनी है वो कर सकता है, वो सहायता करना, वही संबंध है। क्रिया के साथ संबंध नहीं, मतलब वो असत्व है। समझ में आ गया अभी? अव्यय को कह सकते हैं? हाँ, अव्यय, हाँ अव्यय सब ऐसे ही है। वो सारे अव्यय नहीं है। जो अव्ययी भाव समास के द्वारा जो अव्यय होते हैं वो अव्यय नहीं है। वही निपात जो होते हैं, ये चादिगण प्रादिगण, ये सब ऐसे ही होते हैं। अगर అవ్యయీ భావ సమాసాలు అవ్యయ అంటే వాటికిను వీటికి తేడా ఏంటి? अव्ययी भाव समास एक समास है जिसमें एक अव्यय और एक सुबंत दोनों मिलके एक समास होते हैं। होने के बाद वो समस्त पद भी अव्यय की तरह बदल जाता है। अव्यय की तरह, that whole samasa word will act as an avyaya. It's not actual avyaya, but it will act as an avyaya. So that word can also be a subanta if it is used as a subanta, is it? No, that word can't be used. That all the avyayas are subantas only, because Correct. No, means that avyaya, it can also have vibhakti pratyaya. vibhakti Pratyaya. That avyayi bhava samasa samasta pada can act as an avyaya, but it can also act as a subanta with the vibhaktis. Yes. Okay. So this is all about asatvam, satvam. So which is not a satvam, that is called asatvam. Whenever these the shabda swarupas in chadi gana or chadi group, if these shabda swarupas are used as asatvam, then these can be named as nipataha, pradayah. Next sutram. These pradayas also, whenever pradigana, already we have seen उपसर्गा क्रिया योगे प्रापरा अपासम अनु अवनिस निर्दोष दुर्वियांगनी अधि अपि अति सूत अभिप्रति परि उपा प्रादयः 22 शब्द स्वरूपास. I told you to remember all these शब्द स्वरूपास.
असत्वे असत्वे अर्थे ये प्रादयः भवन्ति तेपि निपाताः भवन्ति प्रादि द लेटर्स इन प्रादिगण आल्सो if they are used as asatva then these shabda swarupas are also considered as nipatah. Any doubts? आचार्य निपात शब्द की क्या निपात शब्द का यह अर्थ है वो शब्द ऐसे ही बनाकर निपात कर दिया, मतलब ऐसे डाल दिए। उस शब्द का हमें प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, ये कुछ हम ये कर नहीं सकते। अभी चा जो है, चा में क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, इन प्रकृति प्रत्यय की किस अर्थ में इसको हम चा डिराइव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जैसे राम शब्द है, यहाँ रम धातु है और आप घई बोल के एक प्रत्यय है, दोनों को मिला के राम बनता है, जिसका अर्थ है जो सारे जगत को आनंदित रखते हैं, ऐसा अर्थ होता है। यहाँ वैसा हमें प्रकृति प्रत्यय विभाग सब कुछ नहीं कर सकते, वो रेडीमेड शब्द है। जी, जी। निपात का अर्थ ये है। तो वो उसके उत्पन्न होने का क्या औचित्य है? वो स्वभावतः आ रहा है। स्वभावतः वो अभी चा के चार अर्थ हैं, समुच्चयः, अन्वाचयः, इतरेतर योगः, समाहारः। ये चार अर्थों में वो चार शब्द का प्रयोग है, भाषा में अनादिकाल से है। जी, ठीक। ऐसे ऐसे शब्द स्वरूपों का चादिगण में कुछ शब्द स्वरूप है, प्रादिगण में कुछ शब्द स्वरूप है, ऐसे। तो इन शब्द स्वरूप जो जब सत्व असत्व अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब किसी क्रिया को क्रिया की उत्पत्ति में इनका योगदान नहीं है, क्रिया की उत्पत्ति के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, संबंध नहीं है, इसका सुलभ अर्थ क्या है? जब ये शब्द स्वरूप चादिगण या प्रादिगण शब्द जो होते हैं, ये शब्द स्वरूप किसी लिंग, विभक्ति और वचन के साथ मिलकर इनका प्रयोग नहीं होता है, तो ये असत्व है। जी। असत्व है तो इनका निपात बोल एक संज्ञा आता है। लेकिन आचार्य जब उपसर्ग बन जाते हैं तब तो अर्थ में वैशिष्ट्य दे देते हैं। तब अर्थ में वैशिष्ट्य, अभी भी अर्थ है, अर्थ वैशिष्ट्य है, लेकिन ये मतलब क्रिया को निष्पत्ति नहीं करते हैं। ठीक ठीक ठीक। अर्थ वैशिष्ट्य हो अभी भी है जी। तो ये आज का क्लास है, कल ये हम प्रकृति भाव कल समाप्त करेंगे। कुछ संदेह है क्या? किसी के कुछ संदेह? आज का क्लास थोड़ा भारी हो गया क्या? जी। सत्व असत्व। I have to catch up with the previous one, sir. So I'll have more doubts in the coming classes. Okay, no problem. Yeah. मुझे लगता है थोड़ा समझ में आ गया। जी जी आचार्य। कौशल जी कैसे समझ में आ गया? आपने हमारे बुद्धि के चावलों को मृदु तो किया है। आप पाक क्रिया में निपुण हैं, जो चित्त की पाक क्रिया है आचार्य, वो धीरे धीरे आ जाएगा।